Hello students, welcome to another class of genetics. Last class we have discussed about post-Mendelian inheritance, but deviation from Mendelism, under which we have studied incomplete dominance and codominance. Today we will go for another short note, that is multiple allelism. Multiple allelism. Multiple allelism. So what is multiple alleles? Students, we have know that from Mendelism में हमें पढ़ी थिलु जे each character has two alternative forms which are called alleles, which are present on same locus on two homologous chromosome. कौन कही ना प्रत्येक कैरेक्टर रो दीटा आलिली थाए, प्रत्येक कैरेक्टर रो दीटा आलिली, वन कैरेक्टर टू alleles बा अल्टरनेटिव फॉर्म, जोटा को मेंडेल कौन कही पोस्टुलेट वन आम कौन कही प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर. सो अकॉर्डिंग टू मेंडेल देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर ईच कैरेक्टर. जमती आम कहवा कौन कैरेक्टर कौन पिला माने प्लांट हाइट दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म हो कौन ना टॉल हो पारे आउ डुआर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी. इमती सब अच्छी प्लांट जदि सीड कलर करवा, सीड शेप कहवा, सीड शेप कहले आम राउंड रिंकिल कहवा, सीड रो कलर कहले आम येलो आउ ग्रीन कहि परिवा. दीटा फैक्टर थाए, ता माने आम जानिचु जे दीटा फैक्टर थाए. बट later परवर्ती स्टेज रे it has been found that there are more than two कौन more than two alleles for a contrasting character. गोटिए कैरेक्टर पाई कि दुई रु अधिक alleles रहिले, तेनु दुई रु अधिक मीन्स अधिक हो गले, नेसेसिटी ठू अधिक हो गले, मेंडेलर पेयर फैक्टर प्रिंसिपल रु अधिक हो गले. सो अधिक पाई कि मल्टीपल आलिली पाई कि मल्टीपल आलिलीज. मल्टीपल आलिलीज रो इनहेरिटेंस रो पैटर्न को आम कौन कहवा मल्टीपल आलिलिज्म. और आम कौन आम कौन कहवा मल्टीपल आलिलीज. सो आम कौन लिखा ना अकॉर्डिंग टू मेंडेल there are two alleles for a character. मेंडेल कौन कही there are two alleles for a character, but if there is presence of more than two alleles for a character, it is called multiple alleles. But later it has been found that there are more than two alleles for a character called कौन कहवा पिला माने multiple alleles.
ओके जो गुड़िक कौन करथिबे होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस रे थिबे which occupy same location तबे सेम लोकेशन रे आसिले कोठू एक्स्ट्रा एलिली आर डेवलप बा जनरेटेड ड्यू टू म्यूटेशन ताले एक्स्ट्रा allele is due to mutation कौन विल स्टडी लेटर म्यूटेशन मीन क्रोमोसोमल चेंज ताले कौन हम मल्टीपल allele हेले कौन करिवो डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर हम एग्जांपल कौन यार एग्जांपल कौन इट इज सीन in human avio blood grouping मु तुमको कॉ डोमिनेंस पढ़ला बेले यार टिके एग्जांपल देइथिली या विषय टिके इंस्ट्रक्शन देइथिली जे ह्यूमन एवियो ब्लड ग्रुपिंग रे एई मल्टीपल एलिलिज्म देखा जाय बिकॉज कौन है था एटा कहि साला पर मु आउथरे तुमको कौन करी ना एग्जांपल को डिस्कशन करिया कौन कहला पिला माने से कहउची मेंडल कहिथिले देयर आर टू एलिलीज फॉर ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देयर आर टू एलिलीज फॉर ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बट लेटर इट हैज बीन फाउंड दैट मोर देन टू एलिलीज फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म जो माने सेम लोकेशन रे रहि थांती एंड are developed due to mutation. It is seen in human avio blood group. आम या डिस्कसन करते जेहेतु ए हेडिंग रे आसुची आउ थरे या कहया कोन ना एटा कोनथि देखा जाय ह्यूमन एवियो ब्लड ग्रुपिंग केमिति तयारी हुए पिला माने हाउ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड फर्स्ट ब्लड ग्रुप वाज डेवलप्ड बाय डिटरमाइंड बाय कार्ल लैंडस्टेनर कार्ल लैंडस्टेनर बोल साइंटिस्ट थे सी देखिले जे आरबीसी रो सरफेस से जो एंटीजेन थाए मु कही गत क्लास आउ थे कहूँ सरफेस एंटीजेन दुई प्रकार थाई पारे एंटीजेन ए एंड एंटीजेन बी बेसिंग ऑन देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ फोर टाइप्स शॉर्टकटली ब्लड ग्रुप देखु ए बी एंड ओ ऑन द बेसिस of presence or absence of surface antigen रो प्रेजेंस आउ एब्सेंस को आधार करके से कौन करथिले ना ब्लड ग्रुप करथिले बाकी ए जो ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड वर्तमान जेनेटिक्स को आसिला ब्लड ग्रुप इज determined by gene I thai which have three alternative forms means alleles that is IA IB and IO out of which IA and IB are dominant over I0 but co-dominant to each other and express togetherly when present together. We have discussed about this. जतबेले IA and IB थिबो
आमे ताको कोन कहबा इट इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस इट इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस तेणु आमर कथा सहित नहीं आमर क्वेश्चन होचे कोठी ना वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ alleles थ्री alleles इन ह्यूमन पॉपुलेशन बट गोटे जीव पाखरे गोटे इंडिविजुअल पाखरे दीटा allele थियो पेयर हे रहिबो बट इंडिविजुअल पॉपुलेशन भितरे इंडिविजुअल दीटा रहिबो पॉपुलेशन भितरे तीनटा allele रहिबो सो ब्लड ग्रुप पाई कि ह्यूमन पॉपुलेशन रे तीनटा allele देखा जाए ह्यूमन पॉपुलेशन रे तीनटा allele देखा जाए केमती मींस कोन कोन IA IB एंड IO सो दीज आर थ्री alleles सो रहिया कथा केते पिला माने 2 एठी रहिला केते allele रो संख्या केते 3 सो दिस इज 3 मींस ग्रेटर देन 2 सो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल allelism याको देखिबो दे लेखिबो नेक्स्ट देखिबा पिला माने कोन हमरो केतेटा अल्टरनेटिव फॉर्म आसीबो केतेटा ऑप्शन आसीबो जे ब्लड ग्रुप पाई कि कोन 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 हेई पारे मु लिखो जे देखो कोन हो पिला माने लेखि थिली मते मने पड़नी गत क्लास रे एनीवे देखो आमे देखिबा प्रथमे जीनोटाइप देखिबा लेखि देली पिला मन पड़छ लेखि थिली सेटा पाउथरे पढी दबो जीनोटाइप देखिबा दिया हो जे कोन कोन जीनोटाइप हो IA ब्लड ग्रुप A IA I0 ब्लड ग्रुप A IB ब्लड ग्रुप B IB I0 ब्लड ग्रुप B IA IB ब्लड ग्रुप AB I0 ब्लड ग्रुप O बा IO ब्लड ग्रुप O व्हाटएवर में से आमे वर्तमान देखिबा केतरा केस देखिबा कोन केस 1 कोन if a person having homozygous for blood group A कौन हम homozygous for blood group A what will be its genotype IA and IA so IA and IA what happens marriage a female of लिखियानी having blood group O अब homozygous कह कि blood group O means it is always homozygotic means IO and IO then they are offsprings जेते छुआबो will be कौन हम पिला माने ब्लड ग्रुप A समस्तंकर ब्लड ग्रुप A हेबो if there is any doubt you may do a checkerboard so IA IO so in all case blood group A will be found so this is case 1 we will go for case 2 if a person have 2 number करिया आउ देखिया कोन होची सेम कथा हो पिला माने केस 2 एठी सार दोची if a person having blood group homozygous for blood group B माने थी B लिखिबा IB एटा A छुआ IB marriage a woman a female having blood group O then their children will be their offspring will be blood group B or vice versa male female blood group A पारे बा female B है कि male A पारे next आउ गोटे केस देखिबा कोन केस नंबर 3 आमे कहया homozygous for blood group A marries a female having homozygous for blood group B what will be genotype IB and IB their offspring will be कौन हम औषध भाई ठीक देखिए तो आगे कौन हो तापर हम आंसर लिखिबा IB and IB what will happen
IA, IB. Next is our B student, IA. So they are all offspring will be having blood group AB. Okay, they are all offspring will be having blood group AB. तुम तुम डिटरमाइन कर छटा ऑप्शन रहा आम पाखे क्या सहित कहार मैरेज हेले कौन कौन तार ऑफस्प्रिंग चांस ऑफ ब्लड ग्रुप आसीपे यू मे डिटरमिन्स लास्ट वन मुझे गोटे कहीदे कौन ना बोधे कोडोमिनेंस करी इफ ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB मैरिज ए फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप AB मीन्स ऑलवेज इट इज हेटेरोजाइगोटिक तेणु आम शॉर्टकट लिखिदेवा इफ ए मैन हैविंग blood group AB marries a female of having same blood group means what are they AB, then their offsprings will be कौन कौन हम लिखा पूर्वर विल डू चेकर वर्ड्स इट विल बी इजियर फॉर अस तुम्हें निजे कौन AB कि IA and IB similarly IA and IB here util IA डायरेक्ट पिला माने ब्लड ग्रुप बसे दउची कौन हम ब्लड ग्रुप A दिस इज IA IB ब्लड ग्रुप AB this is IA IB blood group AB this is blood group B माने 25% चांस रहिबो ब्लड ग्रुप A रो 25% चांस रहिबो ब्लड ग्रुप B रो आउ 50% चांस रहिबो ब्लड ग्रुप AB रो सो एई भलिया सब हेई परिबो मैं देखि परिबा करि परिबा सो दिस इज ऑल अबाउट योर मल्टीपल एलीलॉजी नेक्स्ट वी विल गो फॉर मल्टीपल जीन्स